Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to our South Asian Men's Show. My name is Sivam Velaidam, and I am the founder and the president at Voice of Men 360. Let me share a brief introduction about Voice of Men 360 International Men's Day and why this talk show, South Asian Men's Show, is important and what is it. Voice of Men 360 is a non-profit organization founded in 2020 and is based in Toronto, Canada. Many boys and men are seeking help and support in many areas of their lives. We understand the demands and the support needed when it comes to boys and men in our society. Voice of Men 360 organization was born out of seeing a tremendous need and stepping up to help provide service to help support and overcome men and boys life challenges. We are part of International Men's Day. International Men's Day has been serving over 21 years, and so far 90 countries around the world joined together and doing various activities regularly. IMD follows 6 pillars, which is the overall of the well-being of boys and men. We follow in the same footsteps. Why South Asian Men's Show, or what is it? A show to openly discuss challenges that South Asian men face regardless of where they are in the world, and in doing so, create awareness of their struggles and conflicts in areas of like languages, culture, tradition, and education and abuse. We recognize that these issues are important to South Asian men that are not being discussed openly enough. That is why Voice of Men 360 and all Bengal Men's Forum are stepping up to create this open space to allow individuals or organizations to share their stories. Anyone can participate, regardless of the gender, age, nationality, or ethnic group, and we hope you will. South Asian Men Show is on the third Sunday of every month from 11:30 a.m. to 12:30 p.m. Eastern Time. Each month, an expert from different country in South Asian continent and discuss particular topic. Today, we are going to have guests from Pakistan, and they will speak in their own native language, Urdu. Let me welcome Muhammad Usama Arshad, founder Takmeel Pakistan, civil engineer, mentor, and trainer. Thank you, Usama, for joining. You had to unmute yourself. Um, Usama, Usama, you had to unmute. Thank you, Shivam. And first of all, I would like to thank you, Voice of Man 360, for inviting me and giving me this opportunity. Can you hear? Usama, can you hear us? Hello. What we can do is we can bring a special guest speaker, Shawaz Baluch. Or Usama, can you hear? Yes, I can. Okay, go ahead, please. Thanks. Thank you very much, Shivam. And first of all, I would like to welcome our honorable guest, Mr. Shawaz Baluch, who is a philanthropist as well as motivational speaker. Shawaz Baluch, who inspired me a lot. Assalamu alaikum, sir. कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक थैंक यू वेरी मच शिवाम एंड थैंक यू वेरी मच उसामा फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो वॉइस ऑफ मैन 360 Usama, उसामा आवाज
डिस्टॉर्ट हो रही है आपकी उसामा, योर वॉइस इज डिस्टॉर्टेड. Yeah. Please Maybe come again. Shawaz, Yeah. you can start introduce yourself and start talk. Yes, he can join. So thank you very much, Sivam, for inviting me on your show. This is my second show on Voice of Men 360. First of all, I really congratulate you on starting such an initiative, because there are so many voices which will come on your show, which will come on your platform, and they will tell your problems. There are so many things which need to be discussed from the side of from the gender of men, which have been not been which have been suppressed in the society, and they need to be listened. So first of all, I'm really thankful. And about me, I'm a motivational speaker. I'm a social entrepreneur. I'm a philanthropist. I'm a coach and a mentor. I was an ex-combat pilot, and after that, due to some unfortunate incident, I became blind. I lost my sight, but not my vision. And after that, I started off my capacity building. I won the gold medal in my MS Project Management. I did my PMP from USA. I did my Prince 2 from UK. I also did my social entrepreneurship from Oxford University. And then I did my coaching and mentoring from Oxford University. I am the winner of President of Pakistan Award last year for excellence. I'm also the president of Lahore Toastmaster Club International, and I'm also a Rotary International member. I'm also a TEDx speaker, and I'm also running my initiative with the School of Motivation next month. And I also do different kind of charity projects, and hopefully we'll have a very good and fruitful conversation in the coming hour. This is my small introduction. Now, Osama, can you hear us? Is he back? Usama, I think his network is not really up. So let's just start with the topic, the title, Shawash. What will people I think say? he needs to join again. Yeah, he has to go out and then he has to come back Yes, I again. think he needs But to join again. yeah, I'm not sure what's going on. So let's just start the conversation with the title. Okay. What Okay, we what can do that. um, Right. what will people say? Especially, I have a couple of questions, but let's just start with Yes. what exactly mean to Basically, you. today, Go ahead. yes, the Can you hear title me? is called the, yeah. Can you hear me? Yes. Yeah, go ahead. The title for today's conversation is, yeah. Title for today's conversation is really important. In Pakistan, there's a bit of, say what people will say. This is very important. What people say. For especially for in Pakistan, it has become it has become taboo that people say how we will what people will think. So this is all about today's conversation. And the biggest question here in Pakistan is that when Am I a audible to you? man, he becomes mature. The first thing you have to give your own interest. You don't have to follow your own interest. You have to become the financial, machine for the family. You have to earn for the family. So this is the biggest pressure which men face in Pakistan, that they don't have to follow their interests since childhood, but they have to, below the average Pakistani male who earns from a very average family, there's automatically pressure on him that this guy, you have to earn for us. You don't have to follow your passion. But the thing you should not ignore the education. You have to earn for your education. You have to earn for your education.
own family. One of this pressure in Pakistan. So, Shivam, am I Shawaz, audible to you? Yes, you hear yeah, me, you are. right? Okay, Usama, just continue Yes. with that. He just explained a couple of things, but you can continue. Assalamu alaikum, everyone. Thank you, Shivam. Thank you, Voice of Men 360, for giving me this platform. Assalamu alaikum, everyone. My name is Mohammad Usama Arshad. Basically, I am founder of Takmeel Pakistan. Takmeel Pakistan is an organization which work on youth development. We do trainings, motivational sessions, as well as work on different personality grooming. Assalamu alaikum, sir. शवाज कैसे हैं आप? सर आपको आवाज आ रही है? You can continue your conversation in Urdu and अस्सलाम just वालेकुम explain. सर शवाज आपको आवाज आ रही है? चलें जब तक सर शवाज की आवाज़ नहीं आ जाती सर शवाज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा क्वाइट डायनामिक पर्सनालिटी इनके साथ अगर आप थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करते हैं तो वो आपका क्वालिटी टाइम बन जाता है इनसे काफ़ी कुछ मैंने भी लाइफ में सीखा है आप डिफरेंट जगहों पे जाते हैं आप डिफरेंट मोटिवेशन स्पीकर्स को मेरी फॉलो आवाज करते अभी हैं लेकिन सर शवाज जो हैं वो इट सेल्फ अ मोटिवेशन होते हैं इनको एक मोटिवेशन स्पीकर नहीं मैं कहता मैं इनको इट सेल्फ अ मोटिवेशन कहता हूँ क्योंकि इनकी लाइफ खुद एक मैं मोटिवेशन है उसके जवाब दे दूंगा. इनकी लाइफ के हर पर्सपेक्टिव से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला इवन सोसाइटी को सीखने को मिलता है सर शवाज की लाइफ से सो अस्सलाम वालेकुम सर आपको आवाज़ आ रही है सर आपकी आवाज़ आ रही है आप क्वेश्चन कर आवाज़ आ रही है सर शवाज डू यू हेयर मी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है अब आवाज़ Can you hear me, Usama? Yeah, we can hear you. Sivam, can you hear me? Yeah, we can hear you. I think Usama is having some शिवा internet. am I Usama, audible to you can ask Yeah. yeah, Usama, आप क्वेश्चन करें. You can ask the question. do check if there is some kind of issue with Shawaz Baluch internet connection No, he can hear. Go ahead with the questions. I have the issue. I have the issue. We go ahead with the question, Usama. सर आपको आवाज़ आ रही है Yeah, go ahead. We can hear you. Yes, आ रही है. आपकी आवाज आ रही है. Question पूछ. My question is Okay. Usama. Shawaz. Usama. Okay, what hear me? device you're using? Your phone or laptop? Shawaz. Can you? Shawaz. Shawaz. I'm on phone. Okay, hold on. Usama. Yes, I'm on phone. Usama.
Yes, Shivam, am I audible? Are you using your phone or are you using your laptop? I am using my laptop. सर आपको Okay, आवाज आ रही है? we can hear you. सर शवाज, So you can continue with the questions. I think बस अस्सलाम वालेकुम सर, Shivam, कैसे हैं आप? should I call him? No. He is already on the line. So you can continue with the question. And I would suggest, Usama, can you join also through your phone, just in case? सर Can you call him? सर शवाज, आपको आवाज आ रही है मेरी? Usama, can you hear me? Can you hear us? Yes sir, I Yes, can yes. hear you. आपको ओके अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम करो सर। क्वेश्चन सर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टाइटल के साथ ही। हम आपसे सुनना चाहेंगे आपकी लाइफ का वो सिनेरियो, वो सीन, वो पॉइंट जब आपने अपनी लाइफ में सुना, आपको किसी बड़े ने कहा, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या किसी ने भी, कि लोग क्या कहेंगे। Shavash. नहीं समझ आई आपने क्या क्वेश्चन किया सर मैं आपसे डायरेक्टली Yeah, सबसे पहले अपने टाइटल के बारे में पूछना चाहूँगा कि आपकी लाइफ का वो पॉइंट जब yes, आपको can you किसी hear ने me? कहा हो कि लोग क्या कहेंगे। सर आपका इंटरनेट की इशू है। All right. Shavash, I mean, Usama, यस शिवम, you आई थिंक can ही हैज सम talk. काइंड ऑफ। Yeah, you can talk in general about men's what's going on in Pakistan. So he can continue. You can श्योर share your own perspectives and own views. श्योर। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा डिफरेंट काइंड ऑफ हमारी सोसाइटी में जो मेंस को इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। हमारी लाइफ के 3 डिफरेंट फेजेस होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें अपने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक हमारी यंग एज होती है, उसके अंदर हमें सुनना पड़ता है लोग क्या कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी में एक मैट्रिक का स्टूडेंट है या इंटर का स्टूडेंट है, जब उसने अपना करियर चूज़ करना हो, करियर चूज़ करने के टाइम पे आता है हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, बट उस टैलेंट को वो कहते हैं फ्रूटफुल नहीं बनाया जाता। टैलेंट को ये कहा जाता है, एक लड़का है, अगर वो कहते हैं कि जी मैं किसी स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहता हूँ या मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है एक स्टूडेंट, तो उसको सबसे पहले यही कहा जाता है अगर तुम आर्टिस्ट बन गए तो लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में क्या कहेंगे, तुम्हारा बेटा ये काम करता है वो पढ़ क्यों नहीं रहा। सो दिस इज़ द मेन परस्पेक्टिव, द मेन इशू जो हमारे बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है हमारी सोसाइटी में। सो हमें फोर्स किया जाता है नहीं आप इंजीनियरिंग या मेडिकल की फील्ड की तरफ जाओ और सो ऑन, जो इस तरह की डिफरेंट सो कॉल्ड फील्ड्स हैं। सो हमें इनकी तरफ फोर्स किया जाता है। सेकंड फेज जब हमारा प्रोफेशनल लाइफ का आता है, तो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी डेफिनेटली हमें इस चीज़ के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं और इस चीज़ को सुनना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, बार बार आता है कि लोग क्या कहेंगे। लाइफ में कभी भी कोई डिसीजन लेना होता है, अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में जाना चाहते हैं, अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँ, अगर मैं जाना चाहता हूँ इंजीनियरिंग के किसी फील्ड के करियर में, लेकिन ऑन द अदर हैंड मुझे कह दिया जाए कि जी नहीं आप उस करियर में क्यों जाओगे, वो तो फील्ड अच्छी नहीं है, वो तो लाइफ अच्छी नहीं है, उसके ज़रिए आपका करियर अच्छा डेवलप नहीं होगा, अगर तुम उधर चले गए तुम्हें जॉब अच्छी ना मिली तो लोग क्या कहेंगे इस बारे में। बेसिक लोग क्या कहेंगे बार बार कहा जाता है, पेरेंट्स की तरफ से, बड़ों की तरफ से, टीचर्स की तरफ से। ठीक है, ये हमारी सोसाइटी में का एक अलमी है और बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में डे बाय डे डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज पैदा हो रहे हैं, हमारे मेंस के टैलेंट को ज़ाया किया जा रहा है, उनको डाइवर्ट किया जाता है लाइफ में उनके। सो ये इश्यूज आते हैं हमारी प्रोफेशनल लाइफ के करियर को चूज़ करने के टाइम पे। सेम एज इट इज़ इसके बाद थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा आता है, मैटरनल लाइफ जब Usama, स्टार्ट होने लगती है। जी सर, वी कैन हेयर यू। मेरी आवाज आ रही है आपको जी सर, आपकी Okay, good. आवाज़ आ रही है। Good. I'll change the internet. Let's start. Okay, good. या First, श्योर। सर सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा हमारे टाइटल से रिलेटेड ही।
लोग क्या कहेंगे, हम सुनना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस सुनना चाहती है आपकी लाइफ का वो पॉइंट जब आपको किसी ने ये कहा हो लोग क्या कहेंगे। यस, ये लफ्ज मुझे बहुत बार सुनना मिल रहा है बचपन, क्योंकि मैं एक डिफरेंट थिंकर था बचपन से ही। मुझे एक यूनिक मेरा थिंकिंग प्रोसेस था। जब मैं बचपन में था तो मुझे फार्मूला 1 का बड़ा शौक था, रेसिंग का। और उस वक्त जब मैंने बचपन में इस अपने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं एक फार्मूला 1 का रेसर बनना चाहता हूँ, ड्राइवर बनना चाहता हूँ, तो मेरे इनिशियल जो रिस्पांस था मेरे दोस्तों की तरफ से, बल्कि मेरे रिलेटिव, मेरे फादर ने इसको बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन साथ साथ कुछ रिलेटिव ने कहा कि लोग क्या कहेंगे, व्हाट पीपल विल से, कि यार यू आर क्रेजी, तुम पागल तो नहीं हो गए। तो आई थिंक मैंने उस ड्रीम को अब कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं दिया कि ऑल्दो मैं नहीं बन सका फार्मूला 1, Sorry, Shawaz. लेकिन मैं एक पायलट जरूर बन गया। Sorry, Shawaz. अपनी उस डायरेक्शन। Shawaz. सो दिस इज इट। ये उस वक्त की बात है। जी जी उसामा। Your phone is Kindly- moved, so we cannot see you. या शिवम, We cannot see your face. I think that the phone is just moved. या शिवम, You had to reposition your phone so we can see your face. Yeah, that's good. ठीक है सर, नेक्स्ट मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि जो फैमिली के पर्सपेक्टिव के हवाले से मैं सुनना चाहूँगा कि लोग क्या कहेंगे पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो सबसे पहले हमारी फैमिली इस चीज़ को हमारे सामने लेके आती है। ठीक है, फैमिली प्रेशर ये कितना ज़्यादा हमारी सोसाइटी में मैन के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है। सर आपको आवाज़ आ रही है? Shwaz, you had to unmute yourself. Yeah, go ahead. Sorry. ओके, अच्छा, ओके। तो आई होप तुमने सुन लिया उसामा। जी सर। सर आपको आवाज़ आ रही? अनम्यूट कीजिएगा। सर शवाज की आवाज़ नहीं आ रही। ऑब्वियसली हम एक खानदान, वी आर पार्ट ऑफ अ फैमिली। तो हमारे नजदीक जो हमारे फैमिली में सबसे, ठीक है सर। सॉरी, कैन यू हियर मी उसामा? सर आपकी आवाज़ अब आई है। यस, कैन यू रिपीट योर आंसर? तो आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है आपको उसामा? जी सर अब आई है। जी सर आई है अब। शिवम उसामा, आर यू हियर? आ रही है मेरी? Okay, Shawaz. आवाज नहीं आ रही? Shawaz. शिवम आई थिंक सर। जी सर आ रही है आपकी आवाज़। Shawaz, if you have any other device, any other phone, can you try to log in through that? Because we are not getting this signal though. We are dropping. Okay, Shivam, मैं थोड़ा should I continue then? Yeah, continue with your question and also share your perspective, like for each questions though. You don't need to wait. Okay, sure, thank you. जब तक सर शवाज नहीं आते थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने जो आज के डिफरेंट टॉपिक्स जिनको हम लोगों ने आज डिस्कस आउट करना था, यहाँ पे एंगर मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी में मैन के अंदर, क्योंकि इमोशनल डायनामिक्स से अगर हम लोग एंगर को देखें
ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट नेगेटिव पर्सपेक्टिव हमारे माइंड में आ जाते हैं और डिस्टॉर्टेड थिंकिंग आ जाती है मैन के अंदर। सो उसके ज़रिए जो होता है एंगर मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है। तो एंगर मैनेजमेंट को हम लोग किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे सर शवाज़ के साथ। एज वेल एज जो हमारे अंदर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन का इशू आ जाता है कि जी वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, डिफरेंट रीजंस उनकी हो सकती हैं जो मैन सीख करते हैं, ठीक है, जो मैन के अंदर आते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कस आउट कर सकते हैं। फैमिली डायनामिक्स के हवाले से हम लोग मैन के इशू देख सकते हैं कि जैसे अभी स्टार्ट में हम लोगों ने कहा कि जो डिफरेंट इश्यूज फेस करने पड़ते हैं फैमिली की तरफ से कि जी कुछ भी करने लगे तो सबसे पहले क्या कहा जाता है कि लोग क्या कहेंगे, तुम अगर ये करने लगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर ऐसा हो गया तो लोग क्या कहेंगे। सो हमें यही चीज़ देखनी पड़ती है कि जी फैमिली जो होती है वो हमें नहीं देख रही होती बल्कि लोगों को देख रही होती है कि लोगों ने क्या कहना है। सो जो फैमिली डायनामिक्स के हवाले से है कि जी जो डिफरेंस आ जाता है मैन के अंदर और उनकी फैमिली के दरमियान, सो हमने इस चीज़ को देखना है। इसी तरह स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्या इशू होता है, यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम कैसे बेहतर कर सर हर ठीक है। स्ट्रेस को हमने कैसे मैनेजमेंट करना है। फॉर एग्जांपल एक मैन की लाइफ के अंदर क्या चीज़ होती है, एजुकेशनल लाइफ के बाद जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाता है सबसे पहले उसको एक फुल टाइम जॉब करनी होती है अर्न करने के लिए। अर्न करने के बाद जॉब के बाद उसको अपनी फैमिली को देखना होता है, फैमिली को क्या कहते हैं उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल करना होता है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ को अगर देखा जाए तो कुछ फिजिकल इमोशनल और क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल वेलबींग के अकॉर्डिंग जो होता है ना स्ट्रेस डिवेलप हो जाती है मैन के अंदर, ठीक है। तो अब उस स्ट्रेस को कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, सो इस चीज़ को डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे सर शवाज के साथ। सेम एज इट इज़ जो मैरिज काउंसलिंग का एक इशू आता है, ठीक है, कि जी मैरिज काउंसलिंग आप किस तरह से एक अच्छे रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सकते हो, उस हवाले से जो मैन के ऊपर प्रेशर डाला जाता है उस चीज़ को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। दिस इज़ एन अदर टॉपिक पॉइंट जो हम इसके अंदर सर शवाज के साथ डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो मिड लाइफ क्राइसिस आ जाते हैं मैन की लाइफ के अंदर, ठीक है। जैसे हमारी एक यंग एज होती है, ठीक है, मैन की जब यंग एज आती है उसको डिफरेंट उसकी विशेज़ होती हैं जिसको जब फुलफिल करना है, ही हैव टू फुलफिल ऑल हिज विशेज़ इन हिज मिड लाइफ एज, ठीक है। सो दीज ऑल आर द मिड लाइफ क्राइसिस लाइक डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है कि कितनी अच्छी सैलरी होनी चाहिए, मेरे पास ये आसाइश होनी चाहिए, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, ठीक है, एक अच्छी लाइफ पार्टनर हो। तो ये मिड लाइफ के अंदर ये सारी की सारे ये डिफरेंट डायनामिक्स की चीज़ें आ जाती हैं जो उसके थिंकिंग में होती हैं। अब उसने इन चीज़ों को कैसे हासिल करना है, इन चीज़ों के लिए कैसे वर्कआउट करना है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये मिड लाइफ क्राइसिस की तरफ भी ले जाती है। अगर हम इस चीज़ को एक मैन अगर इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाता अपनी लाइफ के अंदर तो वो मिड लाइफ क्राइसिस की तरफ चला जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर एक लाइफ में एक और पार्ट आता है बीइंग अ गुड फादर, कि बीइंग अ फादर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उसने अपनी फैमिली की अपने चिल्ड्रंस के लिए फुलफिल करनी है, उसका उसके ऊपर क्या इशू आता है, उसको वो किस तरह से टैकल करता है, किस तरह से उस चीज़ को लाइफ में लेके चलता है। सो इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ टॉप पॉइंट्स जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सर शवाज के साथ, और उनको हम लोग किस तरह से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं लाइफ के अंदर, जैसे कि सबसे पहले ही जो मैंने आपके साथ स्टार्ट में शेयर किया था कि जब हमारी एजुकेशनल लाइफ होती है डॉक्टर इंजीनियर बनना, अब डॉक्टर इंजीनियर बनना इज़ नॉट द लास्ट थिंग इन लाइफ, ठीक है। वी कैन डू अ लॉट ऑफ things like we have a lot of fields in which we can go. We can be like CSP officers, advocacy, artist, painting, chef. There are a lot of fields which we can adopt in our younger age for our future life. So these are the things जो कि हम लोगों को ठीक करना होगा। वी हैव टू फिल्टर देम आउट कि इन इश्यूज को कैसे टैकल किया जा सके लाइफ के अंदर। इसके बाद इसमें सबसे बेस्ट वे यही होता है कि जब आप एक यंगर एज के अंदर होते हैं सबसे पहले लाइफ में अपने आप को कुछ गोल्स को सेट किया जाए। हम अपने गोल्स को कैसे सेट कर सकते हैं, हमारी लाइफ में हमने क्या करना है, ठीक है। जब हम यंगर एज के अंदर हमारे गोल सेट हो जाएंगे तो उन गोल सेटिंग की बेस पे हमें रास्ता ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा। अब हमने अगर अपना सबसे पहले गोल सेट करना है, अच्छा एक चीज़ आपको बता दीजिए आपका गोल क्या होता है ज़िंदगी में, आपका मकसद क्या होता है। मकसद आपकी लाइफ की वो चीज़ होती है जो आपको कभी बोर नहीं करती। लाइक अगर आप उसके अंदर दिन रात कंटिन्यूसली भी वर्क करते रहो, काम करते रहो, एफर्ट करते रहो, वो आपको कभी बोर नहीं करेगी। ज़िंदगी में अपने मकसद को जानने का सबसे बेस्ट वे यही होता है,
ठीक है। जब आप ज़िंदगी में अपना एक मकसद बना लोगे ना, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली एक ट्रैक पे चलना स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि मकसद के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। जब आप वो मेहनत करते रहोगे तो आप लाइफ में आगे निकलने के आपके चांसेस होते हैं। हाँ, हमारी यंग एज के अंदर जो सबसे ज़्यादा बॉयज़ को इशू ये आता है कि वो डिफरेंट अपने गोल्स तो सेट कर लेते हैं, लेकिन उन गोल्स पे स्टिक नहीं कर पाते। विद टाइम वो अपने गोल्स को छोड़ते जाते हैं, जो कि उनके ऊपर सबसे बड़ा लाइफ में उनका डिट्रैक्ट करने का इशू आता है। तो कभी भी अगर आपने अपना गोल सेट किया है, तो आपको उसको कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। जब आप उन हर्डल्स को विद टाइम क्रॉस करते रहेंगे, डिटर्मिन रहेंगे, पैशनेट रहेंगे अपने गोल के हवाले से, अपने एम्बिशन, अपने करियर के हवाले से, सो आपका हर्डल्स ऑटोमेटिकली ख़त्म होती जाएंगी। अब आपके पास गोल सेट हो गया, ठीक है, आपको पता लग गया आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। नेक्स्ट चीज़ आती है, आपने उस मकसद को हासिल कैसे करना है, ठीक है। उस मकसद को हासिल करने के भी आपके पास वेज ऑटोमेटिकली क्रिएट होते रहेंगे। अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, बिजनेस की लाइफ हो जाए, एजुकेशन लाइफ हो जाए, डेफिनेटली आपको यंगर एज में अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करना होगा। जब आप एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, अब उसके अंदर आपको क्या इश्यूज आते हैं? सबसे पहले आपको मेन इशू आता है टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। गोल सेटिंग के बाद जो मेजर इशू हमें फेस करना पड़ा है, जो हमने सोसाइटी में देखा है, स्टूडेंट्स में देखा है, मैन में देखा है, बॉयज़ में देखा है, वो आता है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि वो होता है टाइम मैनेज नहीं कर पाते। वी वेस्ट अ लॉट ऑफ आवर टाइम इन डिफरेंट थिंग्स। लाइक इसकी मैं आपको एग्जांपल एक लाइन से कोट करूँगा। अगर हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, अब हम अगर ड्राइव कर रहे हैं, हमने फ्यूल फिल करवाया, ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। जब हम ड्राइव करते करते जाएंगे, अब लाहौर से हमने स्टार्ट लिया, हमें पता है हमने इस्लामाबाद जाना है। तो जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इसका मतलब हमने एक सफ़र तय किया और हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए, यानी कि हमने अपना गोल अचीव किया, ठीक है। दिस इज़ एन एम्बिशन, जिसको एक पाथ के ज़रिए आपने फॉलो किया। ऑन द अदर हैंड, आपको पता ही नहीं है कि आपने की ज़िंदगी में आपका मकसद क्या है, आपने किस चीज़ को अचीव करना है। आप सिंपल गाड़ी चलाते रहेंगे, एक अपना टाइम वेस्ट करेंगे, दूसरा फ्यूल वेस्ट करेंगे, तीसरा आपको क्या कहा जाएगा? मकसद के बगैर जब आप ड्राइव करोगे, आपको आवारागर्दी कहा जाएगा कि आपने आवारागर्दी की है, क्योंकि आपके पास मकसद नहीं है ना इस चीज़ का। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस कि आपके एम्बिशन में क्या फ़र्क होता है, किस तरह से आपने अपने एम्बिशन को फाइंड आउट करना है, किस तरह से आपने अपने गोल को सेट करना है। सो दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड नंबर पे जब हम लाइफ में आगे निकलते हैं, जब हमारा गोल सेटिंग हो जाती है, ठीक है। गोल सेटिंग के बाद हमें मेन इशू आता है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट इस तरह से करते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करना होगा। लॉन्ग टर्म के बाद शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, लाइक ईयरली गोल्स होते हैं, लाइफ के गोल्स होते हैं, लाइफ के गोल्स के बाद ईयरली गोल्स आ गए। ईयरली गोल्स के बाद आपके शॉर्ट टर्म गोल्स, लाइक मंथली गोल्स, के आपने एक मंथ में क्या क्या चीज़ों को अचीव करना है, क्या कुछ आपने करना है। ईयरली के बाद आपके पास आ जाता है कि एक वीक का आपके पास टारगेट होना चाहिए कि आपने इस वीक के अंदर ये चीज़ें सेट आउट करनी है, ये चीज़ों को कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है अपने टास्क को। सेम एज इट इज़, अब उनको आप कैसे करोगे? क्योंकि ईयरली आप तभी कर सकते हो कि जब आप मंथली गोल्स के ऊपर स्टिक रहोगे। मंथली आप तभी करोगे जब आपके वीकली गोल्स को आप फुलफिल करते रहोगे, और वीकली तभी आप करोगे जब आप डेली बेसिस पर अपने गोल्स को सेट करोगे। डेली गोल्स आपको पता होना चाहिए, आप रात के टाइम आपको अपना टाइम मैनेज होना चाहिए कि आपने कल के सारा दिन क्या कुछ करना है, ठीक है। अपने माइंड को फ़िल्टर करें, अपने माइंड को थोड़ा-सा टाइम दें कि आपने क्या करना है, क्या आपकी पॉज़िटिव एक्टिविटीज़ हैं पूरे डे के अंदर, उनको किस तरह से आपने करना है। जब आप वो चीज़ को प्लान आउट कर लेते हो और फिर उसको उसके ऊपर अपने प्लान पे स्टिक करते हो कि आपने नेक्स्ट 24 आवर्स में अर्ली मॉर्निंग आपने उठे, थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ की, मॉर्निंग वॉक की, उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट किया, ब्रेकफ़ास्ट के बाद आपने अपनी डेली रूटीन को फुलफ़िल किया, जॉब की, या फिर आप अगर आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो, एजुकेशन को आपने देखा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी आप गए। जब आप ये चीज़ को ठीक कर लेते हो, उसके बाद शाम के टाइम आपने देखना है कि आपने अपने जो प्लान आउट गोल्स थे, उनमें से पूरे दिन में कितने गोल्स को आपने कंप्लीट किया। सो इफ़ यू कंप्लीट योर गोल 100%, इट इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द डे। क्यों? क्योंकि उसी की बेस पे जब आप कंटिन्यूअसली अपनी वर्किंग करते रहोगे, यही आपके डेली बेसिस जो गोल्स हैं, ये आपके वीकली गोल्स को अचीव करवाएँगे। यही वीकली गोल्स में आपके मंथली एंड देन ईयरली गोल्स, और जब आप अपने ईयरली गोल्स को अचीव करने लग गए, ऑटोमेटिकली आप अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर लोगे। सो दिस इज़ द मेन एंड इम्पोर्टेंट पाथ। और इसके अंदर एक चीज़ आप लोग कंटिन्यूअस हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन की ज़रूरत होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अब ये तो मैंने आपको बता दिया आपकी गोल सेटिंग एंड उसको कैसे अचीव करना है, टाइम मैनेजमेंट। अब हम टॉपिक के अंदर जब देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जब आप सब
सबसे पहले अपनी यंगर एज में स्टार्ट करेंगे आपने अपना करियर कैसे चूज करना है, उसके अंदर सब पेरेंट्स आएंगे, वो आपको कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे इस बारे में। आपने उनको टैकल करना है, उनको बिठा के उनके माइंड को फिल्टर करना है। जैसे आपने अपने आप को फिल्टर किया कि आपकी लाइफ का मकसद ये है, आपने इसको इस तरह से अचीव करना है, तो वो अपनी लाइफ का जो मकसद है, उसकी पॉजिटिविटी, उसके अंदर आप क्या कुछ कर सकते हो, क्या कुछ हर्डल्स आएंगे, उनको आप कैसे टैकल करोगे। शेयर विद दिस योर फैमिली, शेयर विद दिस योर पेरेंट्स, योर क्या कहते हैं, ब्रदर्स, सिस्टर्स, एज वेल एवरीवन। सो जब आप उनके साथ शेयर करोगे, सो दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड यू। सो आप अपनी यंगर एज के अंदर इस तरह से इस चीज़ को टैकल कर सकते हो। सेकेंड नंबर पे एक जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को टच करने के लिए आते हो, प्रोफेशनल लाइफ में आप आते हो कि आपने किस तरह से प्रोफेशनल लाइफ में आगे निकलना है, उसके अंदर जब आपकी फैमिली आपको कुछ कहे या बाहर आपके फ्रेंड्स कहें कि जी ये क्या करने लगे हो, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे इस चीज़ के बारे में। लाइफ में याद रखिएगा, अगर आपकी कंपनी में एक पॉजिटिव माइंडेड पर्सन है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव माइंडेड फ्रेंड्स हैं तो आपकी लाइफ को वो नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे। सो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो गैदरिंग है आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना स्टार्ट करें जिनका पॉजिटिव माइंडसेट हो, जो आपको इनकरेज करें आपकी डिफरेंट पॉजिटिव एक्टिविटीज़ के लिए, पॉजिटिव गोल्स के लिए, पॉजिटिव वर्किंग के लिए। जब आप अपनी गैदरिंग को पॉजिटिवली लेके चलोगे तो डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ग्रूम होना स्टार्ट हो जाएगी। सो आपने इस चीज़ को इस तरह से लेके चलना है। सेम एज इट इज़ नेगेटिव पर्सन को आपने अपनी लाइफ से किक आउट कर देना है ताकि आप पॉजिटिव वे की तरफ चलना स्टार्ट कर दो। तो जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आओगे, आपने अपना करियर चूज करना है कि आपने अब करना क्या है लाइफ के अंदर। सबसे पहले आप करियर में वो चीज़ देखें कि जो चीज़ आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करे, जो आपके फ्यूचर को हेल्प आउट करे। इसमें आपके डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं। लाइक आजकल स्टूडेंट्स जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं, स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, तो वो प्रोफेशनल लाइफ को इसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों का अभी भी माइंड है कि वो एक प्रॉपर 9 to 5 जॉब की तरफ जाना चाहते हैं ताकि उनके पास एक सिक्योर्ड सैलरी उनकी आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ के अंदर भी आपके दो माइंड आते हैं। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने लगते हो तो वही मेन इशू आ जाता है, जो आप लोग वही मेन इशू आ जाता है कि अगर आप अपना कुछ काम स्टार्ट करने लगते हो तो सबसे पहले आपको कहा जाता है लोग क्या कहेंगे, तुम ये करने लगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगे हो, बिजनेस ना चला तो तुम्हारा क्या होगा, करियर खत्म हो जाएगा, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो तुम इस चीज़ को कैसे करोगे। तो इसके अंदर हमारी जो मेजर नंबर ऑफ स्ट्रेंथ होती है, 90% जो हमारी यूथ होती है, जो एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड रखती है, वो उसी टाइम बैकआउट कर जाती है। वो अपने गोल्स, अपने आइडियाज, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, उस चीज़ को छोड़ देती है और वो जैसे दूसरे लोग उसको उनको कहते हैं, वो उसी चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द टाइम यू हैव टू चेंज दैट, यू हैव टू काउंसल देम। आपको उनको बताना चाहिए, आपको उनको गाइड करना चाहिए कि आपका पाथ क्या है, आप किस तरह से करने वाले हो। एंड कभी भी लोगों को ये ना बताओ कि आप क्या करने वाले हो। जब आप उसको अचीव कर लो, लेट योर सक्सेस स्पीक अप, आपकी सक्सेस को बोलने दें। जस्ट आपकी जो अपनी गैदरिंग है, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली जो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा आपको टैकल करेंगे, रोकने के लिए आएंगे, आप उनको बताएं कि आपने करना क्या है, किस तरह से करना है, किस तरह से इस चीज़ को लेके चलना है लाइफ के अंदर। सो ये एक इम्पोर्टेंट लेसन होता है हमारी लाइफ के अंदर। यहाँ पे और हमारे पास कुछ और इश्यूज आते हैं कि जी हमने अपनी जो एंगर मैनेजमेंट है उस चीज़ को हमने किस तरह से देख के चलना है। लाइक इमोशनल डायनामिक्स आ जाते हैं लाइफ के अंदर एंगर के, कि आप कंटिन्यूस 9 to 5 जॉब करो, उसके बाद आके जब घर आते हो आप उसके अंदर आपको डिफरेंट इश्यूज को फेस करना पड़ता है एक मैन की लाइफ के अंदर। स्पेशली जो हमारे मेल मैरिड लाइफ के होते हैं उनको डिफरेंट चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। लाइक उनके पेरेंट्स उनको क्या कह रहे हैं 9 to 5 जॉब के बाद, उनकी फैमिली उनको क्या कह रही है, उनकी स्पाउस क्या कह रही है, उनके चिल्ड्रन उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आके आपको डेफिनेटली इन चीज़ों को देख के चलना पड़ता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। सो अगर उस चीज़ में अगर आपको कोई भी इशू आता है तो वहाँ पे भी इस चीज़ को टैकल किस तरह से करना है, इस चीज़ को आपने लेकर चलना है। अब वो जो इश्यूज आते हैं उनको भी टैकल करने का भी होता है कि वही चीज़ जो आपको स्टार्ट में बताई जाती है, अगर आप स्टार्टिंग एज से ही अपनी माइंड सेट को, अपनी एक रूटीन को सेट करें कि आप अपने डेली बेसिस गोल्स की तरफ आ जाएं, कि आपने लॉन्ग टर्म आपका गोल क्या आपको पता होना चाहिए। उसकी बेसिस पे जो आपके डेली बेसिस गोल्स हैं जिनको आप सेट आउट कर रहे हो कि आपने इनको कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है, रिगार्डिंग योर सेल्फ, रिगार्डिंग योर फैमिली, रिगार्डिंग योर पेरेंट्स, एनीवन। सो जब आप उनको इस हैबिट को अपने अंदर डेवलप करने लग जाओगे तो डेफिनेटली यू कैन
आप इसको ठीक कर सकते हो, आप इसको फ़िल्टर आउट कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा हमारे अंदर जो मिड लाइफ क्राइसिस जो आते हैं, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया था आपके साथ, कि यहाँ पे हम सर शवाज़ के साथ डिस्कस करेंगे। मिड लाइफ क्राइसिस बेसिकली आते हैं कि आपके पास यंग एज के अंदर जो मेल के अंदर आता है कि जी हमारे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, ठीक है? एक अच्छी लाइफ पार्टनर होनी चाहिए। सो इस तरह की ये मिड लाइफ कन्फ्यूजन आ जाती है, मिड लाइफ प्रोमिस आते हैं जो हम अपने साथ कर बैठते हैं, लोगों के साथ कर बैठते हैं कि हमने अपनी लाइफ में ये कुछ हमें चाहिए, ये कुछ हमने करना है, ठीक है? अब उनको आप किस तरह से कर सकते हो? इसका भी एक प्लान होता है कि इसको भी आप अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग लेके चलते हो कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होता है कि व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है? एंड हाउ यू कैन मैनेज दैट, कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम, टोटल आप इनकम आपकी होती है, आप उसको किस तरह से मैनेज करते हो मंथली बेसिस पे, ठीक है? कि आपकी अपनी इनकम का कितना पार्ट होता है कि आप उनको ले Um, Zama, यस शिवम, can you hear me? यस आई कैन, Okay. I just want to ask you a few questions, or maybe या you can शिवम, summarize it. See, you know better than me in your local community in Pakistan, what's really going on within the men's society or men, any issues and any problems that on the day-to-day life, right? And why is happening? I know that you already mentioned a couple of things, but especially the suicide and the mental, mental battle or depression and other things, right? So, can you talk about those, or already have you covered all of this? Definitely, Shivam. I have shared a lot of issues, different life perspective issues that men Right. face. Yeah. As you have asked about the suicidal cases, suicidal cases we have faced on two major occasions. Number one, the issue You can that I actually shared. you can actually speak in Urdu. It's okay. ठीक है, इसके अंदर मैं आपको आंसर यहाँ पे ये करना चाहूँगा, दो डिफरेंट फेजेस जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। एक हमारी यंगर एज आ जाती है, ठीक है? जब आपका लाइफ का करियर डिसाइड करने का टाइम आ जाता है, जब आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आपकी फैमिली आपको रोकती है कि नहीं आप ये चीज़ ना करो, इसकी बजाय आप कुछ और कर लो। एक स्पेशली द लाइफ ऑफ आर्टिस्ट, के अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आप अपनी कोई स्किल्स की तरफ लेके जाना चाहते हो या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चलना चाहते हो, अक्सर लोग जो होते हैं, अक्सर जो हमारे मेन होते हैं, यंग बॉयज़ होते हैं, वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि वो जो लाइफ में करना चाहते हैं दैट इज़ कंप्लीटली यही चीज़ है उनकी लाइफ में, वो इसी चीज़ को लेके चलना चाहते हैं। सो वो उसी की तरफ स्टिक रहते हैं, उनके माइंड में हर तरफ वही चीज़ रहती है। लेकिन जब उनकी फैमिली की तरफ से उनको प्रेशराइज़ किया जाता है, उनको रोका जाता है कि नहीं आप ये चीज़ नहीं कर सकते, अगर आप ये करोगे तो हमें ये इश्यू है, सोसाइटी ये क्या कहेगी इस चीज़ के बारे में कि तुम्हारा बेटा ये कर रहा है, तुम ऐसे कर रहे हो। सो दिस इज़ द मेजर पार्ट के जिसकी वजह से हमारे अक्सर यंग एज में जो होते हैं यंग बॉयज़ सुसाइड करते हैं। अनदर थिंग द एजुकेशनल सिस्टम, के हमारे एजुकेशनल सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ्लॉज़ हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, जिनकी वजह से हमारे यंगर स्टूडेंट भी सुसाइड करते हैं। लाइक हमारे माइंड के अंदर एक दो चीज़ें एक चीज़ मेजरली डाली जाती है, जब हम मैट्रिक में अच्छे नंबर होंगे तो अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छे नंबर होंगे तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे, अच्छे नंबर होंगे तो अच्छी फील्ड में जाओगे। जब बच्चे इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा उनको साइकोलॉजिकल इफेक्ट कर देती है ये चीज़, कि उनके माइंड में जब सवार हो जाती है कि भाई अच्छे नंबर ही लेने हैं और अच्छे नंबर ना आए तो लाइफ करियर सब कुछ खत्म। तो जब नंबर नहीं आते तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ को साइकोलॉजिकल इमोशनली अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। सेम एज इट इज़ जो सेकंड फेज़ आता है लाइफ का, वो आता है तब जब आप, यहाँ पे मैंने एक इशू डिस्कस किया था कि जी बीइंग अ गुड फादर, के यहाँ पे हमारी बेसिकली इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो है ना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो मिडिल क्लास पर्सन होते हैं, द पुअर्टी रेशियो इन पाकिस्तान दैट इज़ अफेक्टिंग अ लॉट ऑन आवर मेन, Uzama, द पीपल, यस शिवम। I want to ask you one thing because since you are mentor and also a student too, like, but in school or university or colleges, right? So within the students' life or circle, right?
of course, they go through a lot of pressure, right? So, Definitely. can you talk about some of those academic pressures and what's going on within the school system? How we can help them? Actually, Shivam, I just answered this question in your last question about Okay. सुसाइड कि जब Yeah. यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट होता है एजुकेशनल लाइफ के अंदर होता है स्पेशली सेकंड पार्ट जो था यूनिवर्सिटी लाइफ व्हेन वी आर इन यूनिवर्सिटी वी हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर लाइक इफ यू हैव अ गुड सीजीपीए यू कैन गेट अ गुड जॉब if you can't have a good CGPA, you can't have a job. This is the main thing which teachers, family, and everyone around us tell us a lot of time, again and again, again and again. So this thing impact a lot ऑन अस ये हमें साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है कि जी स्टूडेंट्स का जब सीजीपी अच्छा नहीं आ पाता ये तो डेफिनेटली वो इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इस चीज़ को ले जाते हैं परेशानी की तरफ तो अल्टीमेटली ये चीज़ जो है ना अगर उनका सीजीपी अच्छा नहीं आता उनको नज़र आता है कि उनका करियर अच्छा नहीं बन रहा उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया स्ट्रेस उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा जो है मेंटल स्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं मेंटली वो अनस्टेबल हो जाते हैं वो सुसाइड की तरफ भी कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आए हैं जो सुसाइड की तरफ भी जाते हैं इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है लाइफ में आपको एक चीज़ बता दूं मैंने खुद अपनी लाइफ में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया योर सीजीपीए डजंट मैटर बट your skills your education definitely matters a lot if you have a good skills if you have a good educational background you can excel in your life so go for your education in a best way give your totally input 100% input in your education don't listen to the negative people the negative people keep on chanting around you a lot again and again continuously but don't listen to them just stick to your path stick to your goals give yourself some kind of ambitions and goals in your life set them and manage your time and just go for your life because you are the only person who can do best for you for your life and for your future. Absolutely. Yes, So this Shivam. point, I want to ask you, or maybe you can talk about the International Men's Day and I mean, International Men's Day, Pakistan, and what are some of the things that you, from your own perspective, from your own ideas, like how we can help those men and boys, through organizations or. Definitely, Shivam. I would like to appreciate your initiative, like Voice of Men 360. It is a good platform for me. Like I have shared a lot of issues that I personally faced in my life, whether I was a student, whether I am in a professional life. I have discussed those issues which I faced, which I saw in my friends, which I saw in the people around me. So this is a good platform for me. I have openly shared those issues of mine. So if I can share those, we have a lot of people around us who definitely want to share those their issues. So as you mentioned about the World Men's Day, I think so. The World Men's Day is going to be celebrated in November, most probably No, on 19th of no, November every yeah, year. it's November So 19th if you every year. have So what So we if are you planning to do have is, any kind of plan, do yeah, share that with me. We can do a lot of things about that. We can do a lot of things in Pakistan regarding Voice of Man 360 because here we have a lot of students or professional persons who are looking for some kind of guidance, some kind of platform on which they can share about their views, about their life, about their issues, how they are facing them, and how they can tackle them. So we can also guide them. We can also get a lot of solutions from some people who have tackled their issues in their life, how they responded those issues when they were facing those issues. So this is the thing which we should look for that. absolutely. So what we are planning to do is actually, Sawash, he couldn't join because of the network issue. But what we discussed is that he has a very good influence, and he has, I mean, he's connected with a lot of people, and also yourself. So you are in the younger crowd. Definitely, he is. So
what we can do is either Yes. we can have a one-on-one chat and then come up with some ideas that how we can implement some initiatives in Pakistan through IMD Uh, Pakistan. You know. Definitely, like as I mentioned earlier in starting about me, that I am founder of Takmeel Pakistan organization, in which we are working on those issues. But as you are working specifically on men issue, but we are working generally, men, women, student issues, especially regarding their education, regarding their career. We do Mhm. train them, we do counsel them, we go school to school, we go college to college, we arrange seminars in different universities, so we have a lot of audience interaction, so we can also collaborate with you and plan a lot of activities here in Pakistan, in schools, colleges, whether we can plan in universities too. So Takmeel Pakistan Especially platform is always as you, available for you, Voice of Man 360. yeah, as you know, the awareness is supposed to start from school, start Sorry, from can you repeat? the awareness. What we are creating, the awareness about men's issues or boys' issues, has to be supposed to be started in the school, and also from the home, from every homes. You know, so Definitely. it's a good to know that you are connected and then you are doing a lot of works related to or to with boys and youth. But also, what we want to do is how we Yes, can definitely I am. empower them and how we can help those boys, who is going through a lot of struggles, challenges, pain on a day-to-day life, right? So we have to identify, we have Actually, to go ahead. actually, the main thing which I have seen, Shiva, can you Yeah, yeah, hear go me? ahead. Yeah, yeah, I can hear you. Go ahead. Shivam, am I audible? Yeah, yeah, I can hear you. Go ahead. Shivam, actually, for that, I would like to tell you that the major issue which we can resolve, that is in our younger age students, like the student of school, the age the boys that fall in between the age of 13 to 16. We can counsel them, we can empower them, we can tell them how to what you can do in their life, what you can achieve, how you can do that. So if we work on the younger age, younger lot, so they can tackle a lot of issues in their future. So we can empower even our whole next generation if we work from today on the age of among the students from among the boys from 13 to 16, because that is the younger age that has to go into the next elder level after their 16-year of age, so we can empower them, so that can be a healthy and helpful idea which can influence them, and we can Absolutely. get So some kind of positive output from this. absolutely. Yeah, we will talk and we will come up with some plans and then implement. We will work on that, especially this year from November 19. Before that we will do something. At least we will have some kind of events, virtual event on November 19th or during that week, Definitely. create some kind of awareness and create some kind of exposure so we can get the word out, so people can get to know what's going on in Pakistan. So I want to ask you, the last thing is that if you can summarize just in a brief couple of lines about what you have discussed so far, especially the topic, what will people say if about men, whatever the thing is, but just summarize in Urdu. Sure, Shivam. Thank you everyone for watching us. uh, फिर वही लाइन, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस चीज को आपने अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देना।
कोई भी आपको ये कहता है कि लोग क्या कहेंगे, सिंपल उनको आंसर दें अपनी खामोशी के साथ, अपनी कामयाबी के साथ। अपनी लाइफ पे गोल सेट करें, अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट को लेके आएँ, अपने आप को ग्रूम करें, अपने गोल्स के ऊपर स्टिक कर जाएँ और कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करते रहें। एंड लाइफ में एक चीज़ कभी ना भूलिएगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है? और जो मोटिवेशन है, यू कैन बी योर मोटिवेशन इटसेल्फ, आप खुद अपने लिए मोटिवेशन बन सकते हो। दूसरों की मोटिवेशन का इंतज़ार ना करें कि कोई आपको आके मोटिवेट करेगा, फिर ही आप लाइफ में आगे निकलोगे, फिर ही आप टैकल करोगे इन इश्यूज़ को, फिर ही आप अपनी लाइफ के डिफरेंट के जी लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ को टैकल करोगे, फैमिली के प्रेशर्स को इश्यू करोगे, एंग्जाइटी के इश्यूज़ को आप रिजॉल्व करोगे। डोंट गो फॉर दैट, जस्ट गो फॉर योर सेल्फ। प्लान योर लाइफ, प्लान योर लाइफ, व्हाट यू वांट, हाउ यू वांट टू डू, किस तरह आप करना चाहते हो, कब करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, अपनी लाइफ में उस चीज़ को प्लान करें एंड गो फॉर दैट। थैंक यू। यस शिवम। Thank you, Usama. Thank you, Sabash. I know you couldn't join because of the network issue, but so far, Usama discussed or shared a lot of things. Very, very informative information. I mean, valuable information he shared. So, from this point, what we will do is we will continue this conversation throughout this platform and especially throughout this show, South Asian Men Show. And we will bring more and more discussion around men issues in Pakistan. So thank you, Usama, and thank you for joining. Thank you, Shivam. Thank you, Uh, Shivam. Thank you, Voice of Men 360. Assalamu alaikum. Thank you. So people, whoever is watching, we have other announcements as follows. We have, as many Canadian knows, that our indigenous communities are in a big crisis now and they need our help and support. Voice of Men 360 is stepping up and started a donation drive for indigenous families. If you have used cloth, dry food items, please let us know. We will collect them. Call us at 416 or 437-889-8329, or you can send us an email info@voiceofmen360.org. Contact us through Facebook Messenger and let us know. We will coordinate with you. We have few live shows. Open up, sharing your life, personal life journey. Live talk show is on every Wednesdays at 6 p.m. and Sundays at 10 a.m. Eastern Time. And another second one is Billy. Tamil live talk show is on Sundays at 8 a.m. Eastern Time. Monthly webinar, first Saturday of every month at 10:30 a.m. Eastern Time. We bring expertise, organizations, and discuss a particular topic each time. Monthly men's show, the unspoken tier. Second Saturday of every month from 10 a.m. to 11 a.m. The focus is domestic violence against men, bullying, male sexual abuse, traumas, and human trafficking. South Asian Men's Show. This is the one just you participated. Third Sunday of every month from 11:30 a.m. to 12:30 p.m. Eastern Time. Voice of Men 360 and all Bengal Men's Forum will be hosting this show. We will specifically focus on the issues faced by South Asian men and create awareness. Each month, different continent in South Asian will participate. Podcast. All of our shows are available on 6 platforms, including iPhone, Google Play, and so on. Monthly men's group meeting only for men by men every 2 weeks on Tuesdays from 6 p.m. to 7:30 p.m. through Zoom. The next one will be Tuesday, October 19th. Please join through Zoom. The link is available on our Facebook page and group. Pass the Talking Stick, Indigenous peer-to-peer support group. Fourth Friday of every month from 6 p.m. to 7 p.m. Through Zoom. There are no limitations with gender, age, nationality, or ethnic groups. All walks of life can participate in any of our shows.
If you want to be a guest on any of our shows or willing to be part of our organizations and help us directly or indirectly, please reach out to us. We would love to work with individuals, professionals, experts, community organizations, associations, or corporations, and government officials and businesses too, of course. Phone number 437-889-8329. 437-889-8329. Email address info@voiceofmen360.org. You can find us on all the social media platform, Facebook group and page. Join our group so you can see our daily activities. Please invite your friends. We are actually running a special campaign. Before November 19th, we want to reach out 5,000 members. So right now we are 2,300. So please help us. Please share the link so they can join. Other social media platforms are Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, TikTok. We have done over 250 shows. So if you can subscribe, you can get to know more shows of ours. And please, I want to leave one suggestion or one request at this point. So whatever the information we shared here, discussed here at today's show, please think about that, and also share with other people. So this is the way you can contribute. At least you can make a little bit change in our society, and it is really worthwhile for the people whoever have come across and then did the show, join the show. All right. With that, see you next time. Take care. Thank you.